we were doing the forms of government, we have completed the monarch form of government, then we have completed the aristocracy form of government, we have even completed the dictatorship form of government. Now we are doing the democracy form of government. We have already discussed about what is the democracy, what is the democracy as a form of government. Then we have even discussed about the direct and like direct and indirect form of democracy. Now let us discuss in the same topic about the representative and indirect like representative or indirect democracy. So the other form is representative or indirect democracy on the basis of universal suffrage. In this form, citizens of the country elect their representative on the basis of popular votes. The will of the state is formulated and expressed through the representative. The representative form a lawmaking and law executing agency for a fixed term. On the matter of governance, the representatives are accountable and answerable to the public in general. So, student, now this is the another form of government in the same topic, that is democracy. So, in democracy, we have studied about the direct form of government. Now, it is the indirect form of government in which what people do, they elect a representative by the method of what? By the method of popular votes. Like वो अपनी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव लेकर आते हैं. अब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वो उनका प्रतिनिधित्व करता है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. अब जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आया है उसके पास काम क्या होता है? उसके पास काम होता है लॉ बनाने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का थ्रू दी स्पेसिफिक एजेंसीज, और एक फिक्स टर्म के लिए वो अपॉइंट होता है गवर्नमेंट के पास. फिर वही अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है पब्लिक को. इन जनरल अगर कुछ भी काम होता है, जैसे कि सिर्फ फॉर द एग्जांपल आपके शहर का मेयर हो गया, ठीक है, तो या कोई भी एमएलए हो गया, वो आंसरेबल होते हैं आपके शहर में कुछ भी अच्छा या बुरा होने के लिए. As observed by Gardner, this kind of democracy resembles its pure form in the sense that political powers remain vested in the people, but the two differ in respect to their exercise. सो गार्नर ने बताया कि जो एक पॉलिटिकल थिंकर है उसने बताया कि जो इस तरह की डेमोक्रेसी होती है वो उस चीज़ को दर्शाती है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो आज भी लोगों के हाथ में है. कैसे? क्योंकि लोगों के पास ही पावर है वोट का, इलेक्ट करने का अपना रिप्रेजेंटेटिव, जो कि उनको आगे रिप्रेजेंट करे, उनके लिए काम करे. Thus, all the citizens of the state have equal opportunity of participation in the political affair of the state, in contrast to monarchy or dictatorial form of government. The political power remain in the hand of the people. इस तरह की जो पॉलिटिकल पावर्स होती है, इस तरह की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की पॉलिटिकल अफेयर्स में. और ये बिल्कुल डिफरेंट है मोनार्की और डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि मोनार्की में क्या होता था, किंग और क्वीन का रूल होता था, वो जो कह दे वो हो जाता था, वो चाहे हेरारकी चली आ रही हो, हेरिडिटरी चली आ रही हो, या फिर वो किसी भी पावरफुल तरीके से राजा बना हो. ऐसी एरिस्टोक्रेसी में था कि वहीं के जो वेल्दी लोग होते थे, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल होते थे, वो बन जाते थे रिप्रेजेंटेटिव. पर इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, इसमें लोगों के पास अधिकार है, लोगों के हाथ में है पॉलिटिकल पावर, वो जिसे चाहे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ वोट. Parliamentary system, the legislature and the executive are related to each other by way of membership in two bodies and their accountability. This form of government is well prevalent in India and United Kingdom. The executive body, while implementing law and discharging its responsibility like health, education, food and public distribution, defense, police services, etc., is responsible to the legislature.
اب اسی کے اندر ہی پارلیمنٹری سسٹم ہے لیجسلیچر کا، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے پاس ادھیکار ہوتا ہے ووٹ کرنے کا. تو جو لوگ باغ ووٹ کر کے الیکٹ ہو کے ایز ریپرزینٹیو آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ممبر بن جاتے ہیں، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو فارمس آف گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کون کون سی ہوتی ہیں. ایگزیکٹو ہوتی ہے، لائک ایگزیکٹو ہو گیا، لیجسلیچر ہے، جوڈیشری ہے. تو لیجسلیچر کا کیا پارٹ تھا، لیجسلیچر از دی لا میکنگ باڈی، ویئر ایگزیکٹو کیا کرتی ہے، اس لا کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. جیسے کہ لوگوں کی رسپانسبلٹیز کا خیال رکھنا، ان کی ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، فوڈ کا، ڈیفینس کا، پبلک سروسز کا، اس طریقے کا وہ خیال رکھتی ہے. ویراز جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اٹس اے لا پروسیسنگ باڈی. وہ لوگوں تک صحیح قانون، ان کے ادھیکار اور ان کو جسٹس دلانے میں ہیلپ کرتی ہے. سو اس طرح کی جو پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے انڈیا میں بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایون یونائٹیڈ کنگڈم بھی اسی طرح کی لیجسلیچر کو فالو کرتا ہے.